ये इतने सारे अजीबोगरीब किस्म के अल्फाज इनके मायने देखते हैं और इनका यूज भी देखते हैं इन सेंटेंसेस. सो वी हैव हियर आफ्टर, इसके बाद. आई विल बी मोर केयरफुल हियर आफ्टर. देयर आफ्टर, उसके बाद. ही गेव स्पीच एंड लेफ्ट देयर आफ्टर. वेयर अपॉन का मतलब होता है जिसके बाद. आई पेड द फाइन वेयर अपॉन द पुलिस क्लोज द फाइल. वी हैव नॉट विद स्टैंडिंग मतलब होता है बावजूद इसके, राइट. सो नॉट विद स्टैंडिंग द इंजरीज the team still won the match. Nonetheless या nevertheless दोनों का एक ही मतलब होता है लेकिन फिर भी. She was really mad at me. Nevertheless or nonetheless she didn't say anything. So I hope it's clear. इसको शेयर भी करो, इसको सेव भी करो अपने पास so that you don't forget the use of these words hereafter.